Hello people, today's topic is algebra. I'll be taking up 30 questions in total, and these questions are the important questions with their tricks. So the video is going to be in two parts. I'll start from here. The formula you can see written here is a plus b whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab. From this formula, I've derived a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab. Right? Now, इसी से this derivation comes out to be x plus 1 by x. If I consider x as a, 1 by x as b whole square, then that is equal to x square plus 1 by x square plus 2ab. X and x gets cancelled and we are left with x square plus 1 by x square plus 2. Or I can write it as x square plus 1 by x square is equal to x plus 1 by x whole square minus 2. Right? So this is the base for all the questions that we are going to solve. Now the question is, if x plus 1 by x is 3, then find the value of x raised to the power 4 plus 1 by x raised to the power 4. Okay, so I'll start from here. X square plus 1 by x square is equal to, from here if you can see, it is x plus 1 by x whole square, that is 3 whole square minus 2. So it's going to be 9 minus 2 is equal to 7. What I need is x raised to the power 4 portion. So now I'll square it again. It's going to be x raised to the power 4 plus 1 by x raised to the power 4 is equal to a plus b. If this is again a and this is again b, so a plus b whole square, that is 7 whole square minus 2 again. It's going to be 49 minus 2, which is 47. So the answer for this question is 47. Right? Okay. Now I'll give you time to take a screenshot in the end. So don't worry about it. Just understand what I'm saying right now. Now the next question is x plus 1 by 3x. X plus 1 by 3x is equal to 2. Then find the value of 9x square plus x square. If you can see, there is no 3 here which can turn into 9, and there is no 3 here, so I have to eliminate this 3. I'll multiply this whole equation, multiply the equation with 3. Multiplying the equation with 3, so it is going to be 3x plus 1 by x, because 3 and 3 gets cancelled. 1 by x is equal to 2 into 3 is 6. Right? Now we can do it. It's going to be 9x square plus 1 by x square is equal to a plus b whole square minus 2ab. So a is 3x here and b is 1 by x. So x and x gets cancelled and we are left with 2 into 3, 6. So it's going to be 6 ka square is 36 minus 6, which is 30. So answer to this is 30. Right? Now moving further, if 2x plus 3 plus 1 upon 3x is 4, then find the value of 9x square plus 4x square. A question with same aura. Multiply the equation with 3 by 2, and I'll tell you, you'll just get to know why it is so. If I multiply this by 3 by 2, it's going to be just 3x. This by 3 by 2 will make it 1 by 2x. And this multiplied with 3 by 2 will make it 6. Alright. Now 3x का whole square होगा 9x square. 1 by 2x होगा 1 by 4x square. Placing the formula again, this is going to be a plus b whole square, that is 6 ka whole square, minus 2ab. So 2 into a into b. So x and x gone, 2 and 2 gone. We are left with 36 minus 3. So your answer is 33. Your answer is
33. So if you can see, it's going to be very easy once you practice a lot and you come across such kind of question and you are very comfortable with these particular formulas and these particular tricks. All right. Type 2. Type 2 is giving you questions where in the previous questions, if you can see, it was just, there was no exponential powers here. And you had to find value for the equation that had exponential power. Here the case is opposite. It's x square plus 1 by x square is equal to 47. X square plus 1 by x square is equal to 47. Then find the value of x plus 1 by x. You are going to do it in a manner. If you see this, you are going to do it x raised to the power 4 plus 1 by x raised to the power 4 plus 2. If you add 2 to both the sides, adding 2 to both the sides will give you 49 here, 49 here. And this, if you can see, this you can see is x square plus 1 by x square का whole square. So x square plus 1 by x square is equal to 49. Or I can say x square plus 1 by x square is equal to 7. Square root कर दिया इस पूरे equation का. Square root कर दिया and I have got x square plus 1 by x square is equal to 7. Again placing the same thing, x square plus 1 by x square plus 2 is equal to 7 plus 2. Right? Is equal to 7 plus 2. So this is x plus 1 by x का whole square है ये. This is x plus 1 by x का whole square and this is 9. So x plus 1 by x का value आ जाएगा 9 का square root कितना रहेगा 3. So answer to this is 3. Answer to this is 3. देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल वन. इट्स जस्ट यू हैव टू, उल्टा प्रोसेस चल रहा है. वहाँ पे हम यहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ आए. वहाँ हमने माइनस किया था, हम इधर पहुँचे थे. यहाँ हमने प्लस किया और हम यहाँ पहुँचे. और ये 2 इसलिए रहा है बिकॉज इफ़ यू मल्टीप्लाई, इफ इट इज़ 2ab, it's a square plus b square plus 2ab turns out to be a plus b whole square. अगर यहाँ पे 2ab भी करेंगे तो a is this, b is this, they both will get cancelled and you'll be just left with 2 here. Same is the case here. Alright. Moving to the third type. The third type looks like a quadratic equation, but we are not going to solve it with the same concept. What we are going to do, we are going to divide. We are going to divide both sides by x first. We are going to divide this equation with x first. So x square upon x minus 3x upon x plus 1 upon x is equal to 0 upon x. Gives me x plus 3, x minus 3, x minus 3 plus 1 upon x is equal to 0. So, यहाँ पे अब आगे क्या करना है? आगे हमें we'll be seeing कि अगर मैं ये ले लेती हूँ, अगर मैं if I keep it like this, x plus 1 upon x is equal to, this goes there and becomes 3. हो गया इतना? अब तो हमें पता ही है हमें क्या करना है. हमें करना है x square plus 1 upon x square is equal to x a plus b whole square minus 2. So we'll get 6 minus 2 is 9 minus 2 is 7. So we'll get x square plus 1 upon x square as 7. Question number 6 says x plus 1 upon x is equal to 5. What I'll be doing, I'll be taking the LCM first. X square plus 1 upon x is equal to 5. Right? X square plus 1 upon x is equal to 5. प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा x square plus 1 is equal to 5x. Now in this
in this part it is 5x upon x square plus 10x plus 1. So I can write it as 5x upon x square plus 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? I can write it as 5x and plus 10x यही वाला. So it is 5x upon 15x. X gets cancelled. So it is 3. So it is 1 upon 3 is the answer to this question. Alright. See, 2-3 steps में question हो जाता है. You just have to have a good approach, and that comes only when you practice. If you are not practicing, this thing will not be on your tips. Moving forward to question number 7. The question number 7 says difference of two numbers is 10 and their product is 75. Then the sum of square of those numbers is what? So if the question is saying a minus b is 10 and a into b is 75. A minus b is 10, a into b is 75. Going up with the formula that if a square plus b square, a square plus b square, or I should be saying a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. What I need to find? I need to find this sum of squares of those numbers. Sum of squares of those numbers. So it is a square plus b square is equal to a minus b whole square. A minus b whole square plus 2ab. So ये निकालने के लिए मुझे ये बताए a minus b 10 है. So 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2ab. ab मुझे पता है 75 है. 2 into 2 करेंगे तो 150 हो जाएगा. So the answer for you is 250 here. So the answer is 250 here. ऑलराइट, बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल के आते हैं दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर में हमें और क्या कर सकते हैं? हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है. इतना होता है ना, और ये वाला प्लस 2ab तो है ही. सो दिस एंड दिस टुगेदर बिकम्स 4ab. इतना क्लियर है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है. सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर भी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab हो सकता है. होगा ही. अगर आप कैलकुलेट करेंगे आगे तो ये हो जाएगा, अगर आप डेराइव करेंगे तो. सो क्वेश्चन नंबर 8 यही बात कर रहा है. इट इज 1x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x square, right? So I'll be using a minus b ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज करूँ इसमें तो क्या होगा? ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर. x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 4ab. Oh, this is plus. I'm sorry, this is plus. Yes, according to the formula if I go. Right. So मुझे पता है I am given with that x plus 1 upon x. x plus 1 upon x is 3. ये मुझे दे रखा है. So 3 का square is 9 minus 4. So your answer is, not actually answer, we have the answer is going to be somewhat from here. So if this is x minus 1 upon x square is 5. So x minus 1 upon x is root 5. Right, x minus 1 upon 5 is root 5. Okay, and we know that a square minus b square. A square minus b square, x square minus 1 upon x square is equal to a minus b into a plus b. Okay, so this is going to be, we have this as root 5 and we have this as 3. So your answer for this is 3 root 5. 3 root 5 is the answer. हम कुछ formulas cube से related देख लेते हैं. So a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square.
सो दैट कम्स आउट टू बी, अब मैं इसका डेरिवेशन करूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। उसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से डेरिवेशन निकले तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। सो ये याद कर लेना, डू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, दे आर इम्पॉर्टेंट. Algebra is majorly based on formulas and how you know how quickly you can use them. So the question here, question number 9 says 2x plus 3 plus 1 upon 3x is equal to 2. Right? If you can see, it is 2 here and we have a cube of 3 here. So what we'll do, multiply equation by 3 by 2. So 3 by 2 multiplied by this whole equation will give you 3x plus 1 upon 2x is equal to 3. And now you can see, you can get it in this form. It is 27x cube plus 1 upon 8x cube is equal to, formula if you can see, plus का sign है, यहाँ भी plus का sign है, so formula will go this one. So it is a plus b whole cube, a plus b whole cube minus 3 into a is 3x, b 1 by 2x into a plus b which is 3. So सिर्फ x x कट रहा है यहाँ पे. So it is going to be 27 minus 3 into 3 into 3. 3 into 27 upon 2. 27 minus 27 upon 2. So it is going to be 27 upon 2. So your answer is 27 upon 2 here. Next question, question number 10. It says if 4x plus 1 upon 5x is equal to 4, then find 125x cube plus 1 upon 64x cube. The question is same. All you have to do, you have to multiply this whole equation by 5 by 4 क्योंकि मुझे यहाँ 5 चाहिए और यहाँ 4 चाहिए. So 5 by 4 with 4x plus 1 upon 5x is equal to 4 से अगर multiply करेंगे we'll get as 5x plus 1 upon 4x is equal to 125x cube plus 1 upon 64x cube is equal to a plus b whole cube minus 3 into a into b into a plus b whole a plus b. So it's going to be 75 because x and x will get cancelled here. It is going to be 125 upon in minus 75 upon 4. 75 upon 4, and the answer is going to be, when you'll solve it, you'll get 425 upon 4. So this is the answer here. Coming to the next question, if x minus 1 upon x is 5, then find x cube minus, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करने का ही नहीं है, 1 upon x cube, बस ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना आपको, this formula. So it's going to be a minus b whole cube plus 3 a into b कैंसिल हो जाएगा सब, 1 बचेगा into a minus b 5. So it is going to be 25 plus 15, 125 plus 15, it is 140 is the answer here. Okay, next question देखते हैं. If x plus 1 upon x is 3, find x is to the power 5 plus 1 upon x is to the power 5. If we know 5 is derived from 5 sum होता है 2 and 3 का. So what I can do, first I can find the x square part and then the x cube part. X square plus 1 upon x square is equal to a plus b whole square minus 2. 9 minus 2 is 7. Alright, x cube plus 1 upon x cube is equal to a plus b whole cube minus 3 into a into b, which is going to be 1, into a plus b. So 9. So it is 27 minus 9 is equal to 18.
राइट अब हम इन्हें सम तो नहीं कर सकते, व्हाट वील डू, बट अगर हमें पता है कि जब हम एक्सपोनेंशियल पावर्स के बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, इफ द बेस आर सेम द पावर गेट्स एडेड, सो हमें वही करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 7 into 18. 7 into 18. We know that 7 into 18 is 126. This is 126. मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं इसको पहले दोनों से, इसको एक बार एक्स क्यूब से करेंगे तो एक्स रेज़ टू द पावर 5 आएगा, एक्स क्यूब इधर से करेंगे तो आएगा 1/x। अब इसको करेंगे दोनों से, जब इधर करेंगे तो x आएगा और इसको जब इससे करेंगे तो एक्स रेज़ टू द पावर 5 आएगा। हमें ये पता है कि x plus 1/x is 3. So I can just write x raised to the power 5 plus 3 plus 1/x raised to the power 5 is equal to 126, which is x raised to the power 5 plus 1/x raised to the power 5 is equal to 126 minus 3, which is 123. So answer is 123. So question number 13 is, if x plus 1/x is equal to 3, then find x raised to the power 7 plus 1/x raised to the power 7. 7 कैसे मिल सकता है हमें? 4 and 3 से। So पहले हम 4 निकालेंगे, फिर हम 3 निकालेंगे। 4 is x² plus 1/x² is equal to 3 का square minus 2 is equal to 7. Again x raised to the power 4 प्लस 1/x raised to the power 4 इसी से डिराइव हो जाएगा, ऊपर समझाया है अभी। माइनस 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 इज 47। x raised to the power 4 निकल के आ गया, x raised to the power 3 निकालेंगे, प्लस 1/x raised to the power 3 plus 1/x raised to the power 3 is equal to a plus b whole cube, that means 3 का whole cube माइनस 3ab गया इंटू a plus b whole cube इंटू a plus b, सो ये आ जाएगा। सो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, फिर से 18 आ गया। सो 7 and 18 दो मेरे पास आ गए। अगर मैं करूँ x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई कर दूँ इन्हें आपस में, क्यूब इज इक्वल टू 47 इंटू 18। 47 इंटू 18 अगर मैं इन्हें सॉल्व करूँ सो इट इज़ गोइंग टू बी 846, गोइंग टू बी 846। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स रेज़ टू द पावर 7 प्लस अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो बन जाएगा 1/x, बन जाएगा 1/x, राइट। देन दिस multiplied by this is going to be x plus again this into this is going to be 1/x raised to the power 7. This we know is 3. We'll subtract 3 from here. It's going to be 843. So x raised to the power 7 plus 1/x raised to the power 7 is 843. Your answer is 843 here. अब एक देख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस bc माइनस c। ऑल राइट, बहुत बड़ा फॉर्मूला है पर याद तो करना पड़ेगा। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस में a प्लस b प्लस c ज़ीरो होता है, और अगर वो ज़ीरो है सो कीप इन माइंड ज़ीरो मल्टीप्लाइड विद whole of this will be 0. So hence the formula is going to be a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is 0, or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. एक क्विकली क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पे a का वैल्यू दे रखा है, b का वैल्यू दे रखा है, c का वैल्यू दे रखा है। निकालना क्या है ये। अब मैं इसको फिर इसको फिर इसको तीन बार मल्टीप्लाई करूँ, लाइक क्यूब ऑफ दिस क्यूब ऑफ, उससे अच्छा है वाई नॉट फाइंड a प्लस बी प्लस सी क्या ज़ीरो है। इज इट ज़ीरो, इज इट ज़ीरो, लेट्स फाइंड इट आउट। -50 प्लस -20 प्लस 70 इज इक्वल टू, दिस इज -70
प्लस 70 ज़ीरो. येस इट इज़ ज़ीरो. तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 3abc. सो कर दो उसे बस 3abc इक्वल टू 3 इंटू -50 इंटू -20 इंटू 70. इतना ही करना है. आंसर आ जाएगा आपका 10,000. सॉरी 21 2,10,000. 2,10,000. ओके. इसके बाद आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला यहीं से सब डिराइव किया है, यहीं से सब डिराइव है, ये वाला देखो, a माइनस बी होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. सब कट कटा के ज़ीरो हो जाएगा. ये सब जब खुलेगा ना ये सब, तो कट कटा के सब ज़ीरो हो जाने. नाउ a माइनस बी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन a इंटू बी इंटू सी. 3abc अपॉन a इंटू बी इंटू सी, क्योंकि मुझे पता था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है. सब कुछ आंसर आ गया 3. सो ये तीनों केस, व्हेन आर ऑल दीज 3 केस, एक जो ऊपर मैंने बताया ये वाला, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस. ये पॉसिबल तभी है व्हेन a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ज़ीरो रहेगी. ओके. So this part, the first part of algebra ends here. Do watch our second part where there are going to be even more typical questions on algebra, and we'll be giving you way how to solve them easily, and you can also save your time while solving with those tricks. Thank you. Keep watching our videos. Have a blessed day.